Hello students, welcome back to Re-NEET Masterclass 2 for Physics. So today I have come up with some battle-tested questions which represents a trap, an idea, a concept that has been repeatedly asked in the NEET exams in the previous years. Solving these questions is very important before you go for your actual exam. These questions are specially crafted so that the entire physics concepts are clarified, they are revised, and it makes sure that you are fully prepared for your NEET exam. So to win in this particular re-NEET exam, you don't need to cover the entire syllabus or study the toughest questions. You just need to make sure that you do the standard questions, you make minimum mistakes in the easy questions, and you have revised all the standard questions and formulas. So let's start with the questions. So the first question, the question is on graph. Graphs is a very important concept when you see for NEET. Every year you get a question on graphs. In the last session also, I told you that the graph portion was very important. So this time we have an xt graph. All right. So the position x of the particle moving along the x-axis varies with time, as shown in the figure. The average acceleration of the particle in the time interval. So here is the trap. Generally, whenever we are given an xt graph question, we are asked velocity, right? But here we are asked average acceleration. So let's write the formula for average acceleration. What is average acceleration? Average acceleration is change in velocity v final minus v initial upon time. So we have to find like the average acceleration in this interval. So let's find the initial velocity. So what will be the initial velocity here? Velocity will get from the slope of the graph, right? So initial velocity will be 40 upon 2. It will be 20 meter per second. The slope is positive, so velocity is positive. V final. So V final, the slope of this line will be again 40 upon 2, but it will be negative because the slope is negative. So it will be minus 20 meter per second. So from here we can write A average is V final minus 20 upon total time. So it will come out to be minus 5 meter per second square. So this will be my option. So you'll have to be careful. डरना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया हमसे, हम तो याद करके आए थे कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है और वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी जब भी एक्सटी ग्राफ होगा. नहीं, यू कैन बी आस्क्ड such questions as well. यहाँ पर भी हमने velocity ही निकाला है, but we have to move a step further, right? So yeah, next question. Consider the nuclear reaction. Nuclear reaction again a very important concept and बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन. If the binding energy per nucleon of X, A and B is 7.4, 8.2 and 8.2 mega electron volt, then the binding energy of then the amount of energy released is. So amount of energy released will be equal to what? Binding energy of products minus binding energy of the reactants. So this is our formula, this is our approach. So we just have to put the values over here. So and binding energy is how much? Binding energy will be, this is binding energy per nucleon, so number of nucleons into the binding energy per nucleon, right? So we have to find the binding energy for products. So products will get 110 into binding energy of A is 8.2 plus binding energy of B, it will be 90 into 8.2. This is the binding energy of products minus binding energy of the reactant. So it will be 200 into binding energy per nucleon. So this will be my Q value. Now let's do it. Say this will make 8.2 will come out to be common and this will make like 200. So it will be 200 into 8.2 minus 200 into 7.4. So if we go and solve this equation, I'll get
200 as common, and this will be 8.2 minus 7.4 mega electron volts, and this will be 200 into zero point 0.8, so it comes out to be 160 mega electron volts. So this will be my option. So you have to just remember this formula and do a little calculation. So it's an easy question, but yeah, very important. Transformer. Again, transformer is a very important topic for your NEET 2026 re-exam. You can surely, you'll get a question related to transformers. So in a transformer, the number of turns in primary and secondary are 500 and 2000. So this is my NP, this is my NS. Whenever some data is given, try to write what it is given in the variable form. This will help you recall the formula and build your confidence. If the current in the primary IP is given as 48 ampere and the secondary current you have to find, so you have to find the IS. All right. Now we know that a transformer, an ideal transformer, has 100% efficiency. All right. So we know that EP or ES into IS upon EP into IP is equal to 1. So from here we can write that ES upon EP will be equal to IP upon IS. And we already know that ES upon EP will be equal to NS upon NP. So I write it IP upon IS. Now I just put the values. NS is given as 2000, NP is 500, IP is given as 48, and IS I need to find out. So this will go 4 times and IS will come out to be 12 amperes. Again, an important question, easy question, and similar questions you will get on efficiency of the transformer as well. So just practice the transformer part very carefully. All right. Next question. LCR circuit, again a favorite of NEET. Every year you see a question on LCR circuit. So you have to practice the LCR circuit questions as well. So the LCR circuit, the resonant frequency is 500 kilohertz. If the value of L is doubled and the value of C is decreased to 1 by 8 times of the initial value, the new resonating frequency will be. So frequency, we know that it is proportional to 1 upon under root of LC. Just write the formulas and we'll do the changes that we have been told. So see, this becomes 2 times, right? L becomes 2 times, L is doubled, and C is decreased to 1 by 8 times, right? So this will become 4. So this entire thing F dash will become 2 times of 1 by under root of LC, or 2 times of the original frequency. So original frequency was 500 kilohertz. So this will come out to be 1000. So again, just have to remember the formula for resonant frequency and do some calculations. Very important question. Prism. Again, in ray optics, every year a question on prism is asked. You have to do all the variations that are involved in the prism. So one of those questions is over here. So I have a prism of refractive index root 2, has a refracting angle. Refracting angle is the angle of the prism. All right. N is given as root 2. At what angle must ray be incident so it suffers minimum deviation? So we have to talk about minimum deviation and we have to find the angle of incidence. Now, for minimum deviation, we know that when deviation is minimum, the angle of refraction will be equal to A by 2. If we draw the diagram, we'll get more clarity over this. So let's say this is my prism. This is my angle of incidence. And the ray goes like this. If it's an equilateral prism, like over here, this will be parallel to the base. You have to remember that as well. This will be the angle of refraction. And this R will be equal to A by 2. So just apply the Snell's law over here. So it will be 1 into sine of I will be equal to root 2 times of sine of R, and R will be A by 2. So it will become 30 degree. So sine I will be equal to root 2 times of 1 by 2. So I will be equal to 45 degrees. So again, a very, very easy question, but you have to remember all the formulas, all the conditions of the prism.
it's an advice to all the students to go through each and every pattern of prism, right? It's very, very important. Next question. A convex lens of power 2.5 diopters is in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter. The power of the combination is, so we know that P equivalent is equal to P1 plus P2, right? So we have here a convex lens, so its power is plus 2.5 diopters. A concave lens of focal length 25. So how much will be the power? It will be 100 upon focal length in centimeter, right? So it will be minus of 4 diopter because it is a concave lens. You have to mind the signs, otherwise the answer will be incorrect. So P equivalent over here will become 2.5 minus 4 and it will become minus 1.5 diopter. Signs are very important. So the combination will actually behave like a diverging lens. Combination of lenses is also a very important topic. You have to go through it very thoroughly. You have to mind the signs, remember the signs, practice the questions on different combinations. You can definitely see a similar question in your actual exam. So again, we are just practicing like the standard questions, the questions which are carefully crafted and which are in line with whatever have been asked in the exams till now. So questions are based on those. Each concept, each formula, each trap, it is in line with all those questions that have been already asked and repeated many times. So please go through the questions very carefully and please carefully study the topics that I'm advising you. You'll definitely see questions from those topics. Displacement method, again a very important topic, right? So in displacement method, we have a lens of focal length f and distance between object and screen is 60 centimeter. Find the possible value of focal length. So we know that distance between the object and screen should be greater than equal to 4f to form the real image of a real object, right? So it is 60 must be greater than equal to 4f. So f must be less than equal to 15 centimeter. So the possible focal length that we can have here is 12. Now, why can't we have 15? Because minus 15, we can have plus 15, but we cannot have minus 15 because minus 15 will be the focal length of a concave lens. And in this method, to form a real image, we need a convex lens. All right. So don't get trapped over here that 50 minus 15 भी answer हो सकता है. It can't be the answer. अगर 15 होता plus 15, anything equal to or less than 15 will be our answer. Now this displacement method has many formulas, right? The formula for the focal length, formula for like the distance between the two positions of the lenses, formula for magnification and all. And what makes it very important is that this is a practical method and NEET is obsessed with such practical method, the resonance method in the waves, the displacement method over here in the ray optics. These are very likely to be asked in the actual exam. So please go through these topics. Don't leave them. If you have any doubt, get in touch, get it cleared, and you will definitely do great in the exam. So this is one of the questions on the displacement method. My advice for you is to practice all sorts of problems that are in the displacement method. Yeah. Next question. A flat coil of 500 turns, each of area 50 centimeter square, rotates in a uniform magnetic field 0.14 Weber per meter square about an axis normal to the field of an angular speed 150 radians per second. The coil has a resistance 5 ohm. The induced EMF is applied to an external resistance 10 ohm. The peak current through the resistance is. Okay. So we have an external resistance as well, and we have the resistance of the coil as well. So let's draw the circuit first. So how will the circuit look like? So it will look like something like this. So we have an alternating source and an external resistance of 10 ohm, and we have our coil, and that coil has a resistance of 5. Now we know that phi is equal to BA cos of theta, and theta will be equal to omega into t. So we can write phi as BA
cos of omega t. This is pretty standard. EMF induced will be minus of d phi by dt. One of the three cases of how the flux can be changed. Either it can be changed by changing the magnetic field, by changing the area, or by changing the angle. So in this particular case, we are changing the angle, we are rotating it, rotating the coil. So in this case, we get, if we differentiate it, we get BA omega sine of omega t. So this will be the equation for our induced EMF, and we know this is how our household supply looks like basically. And we have like n number of turns also here, so we can add an n, multiply an n over here. So if you see the sine equation, this will be our maximum value or our peak value. So E max will be NBA omega. All right. Now हमें करंट का पीक वैल्यू पूछा है. So करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा E max upon total resistance or equivalent resistance, right? So it becomes NBA omega upon the equivalent resistance will be 15. So just let's put up the values over here. So my current maximum value will become 500 into magnetic field is 14 into 10 to the power minus 2.14. This will be 50 into 10 to the power minus 4. Converting each and everything into SI units, this will be 150 upon 50. So it goes 10 times, and if you solve these things, this will become 70 and 5. So the answer will be 3.5 ampere. All right. So again, a pretty standard question, but many students are stuck in this ki maximum value kaise niklega. So you have to remember, whenever the coil is rotating, you have to use this equation. All right. Always this equation. So this will be the peak value, and if peak value is asked, current is asked, whatever is asked, you can do it. So electromagnetic induction ka ye part बहुत important है. There can be two questions from electromagnetic induction, one from the changing flux part जैसे कि ये है, and another from the inductance part. Question can be asked on energy stored in inductor, or maybe a circuit diagram involving an inductor. So just go through it. It's a very simple portion, but very important. So next question. Again, graph question are very important. The viscosity graph is asked over here. A spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown, which represent the speed of the ball as a function of time. So again, a very important thing. In the previous years, question has always been asked from viscosity in one or the other form, maybe in the graphical form, maybe in the numerical form, maybe in the dimensional analysis form. So it is very important, and you can really expect a question on this in your exam this year. So as you have dropped the ball, the initial velocity will be 0. And we know that when we drop a ball in a viscous liquid, what will happen is gradually its speed will increase, and then it will attain a terminal speed or a constant speed. So graph should look like this. There can be a case in it jisme they have told ki if we throw a ball in the liquid, the ball will initially have some velocity because we have thrown it. So the graph will look like this. The speed will decrease and it will attain some terminal velocity. So for this question, the answer is this. This is the dropped case and this is the thrown case. So these two graphs you have to remember and read in the question very carefully, that what is given. So in this B curve is the correct one. So this will be my answer. So you have to, remember the variation over here, right? Next question. 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B as shown. The change in internal energy of the gas during the transition is. So it's a PV curve and we are given like a graph, and change in internal energy is asked. So we know that change in internal energy is NCV into delta T.
All right. Now this is a PV graph. How do we get delta T from over here? We know the value of N, we know the value of CV. We have to find delta T. So what we can do is at this point at A, we know that the pressure is 5 kilopascals, the volume is 4 meter cube. So from here, applying the ideal gas equation, we can find the temperature. So PV is equal to nRT, or we can say that T is equal to PV upon nR. All right. So just use this equation. So temperature of A will be 5 into 10 to the power 3 into 4. This is my P into V upon nR. Similarly, the temperature at B will be here, over here. The pressure is 2 into 10 to the power 3 into 6 upon nR. So we put the values over here. For change, we have to find final minus initial, or TB minus TA. So delta U will be N into 3 by 2 R into, this will be 12 into 10 to the power 3 upon nR minus 20 into 10 to the power 3 upon nR. nR and nRs will get all cancelled. So it will be 3 by 2 into 8 minus of 8 into 10 to the power 3. So it will come out to be minus 12 kilojoules. So again, a easy question, but you have to practice such type of question. It might not click instantly in the exam. So always remember, whenever you have to find temperature from a PV graph, you just have to apply the ideal gas equation over here. All right. So thermodynamics again is a very important portion. All you need to do in thermodynamics is study the formulas, learn the formulas for each and every process. While solving the question, first identify the process, which process is given, and then identify what is asked. Work done is asked, change in internal energy is asked, heat supplied or heat exchange is asked, or whatever bulk modulus is asked, and then you have to apply that particular formula. So first identify the process, which process is given, and then the question will get very easy for you. So thermodynamics, each year you'll get at least one question, and it's very, very easy every time. So just revise the formulas and you will definitely be able to solve the questions. All right. Next question. Diode question. You can see this question every year in the exam. See, they have concised the syllabus of the entire chapter of semiconductors. There is no transistors now, so they only have two options over here from where they can ask the question. One is from the diode such circuits, or maybe some theoretical questions, or like they asked in this this year the exam for the rectifiers, or the logic gates. So there are usually two questions from this chapter. So one question will be from the diode, it's for sure, and another will be from the logic gates. All right. So you have to, do both of them compulsorily. So this is again an easy question. You just have to identify which diode will be forward biased, which will be reverse biased. So if we see this, we can see that this will be reverse biased. So no current will flow through this diode. So current will flow in this circuit like this. Now, so the current will be 10 upon total resistance of our circuit. So it will be 4, and it is 2.5 ampere. So again, a very, very, very easy question, very easy question. You just have to identify कि diode कौन सा forward biased and कौन सा reverse biased है, and यही question definitely आपको मिलने वाला है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक ही टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, इसके अलावा ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें. तो देयर इज अ प्रोसीजर टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इवन देयर इज अ स्पेशल फॉर्मूला, एन एवरेज फॉर्म का फॉर्मूला फॉर दिस. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड अप्लाई इट. यू हैव टू डू अ लिटिल कैलकुलेशंस दो, बट again it's a pretty standard question. So a body cools down from 80 to 60 in 10 minutes when the temperature of the surrounding is 30. So let's write down the formula first. What is the formula? So formula is T2 minus T1 upon T will be equal to minus of K into T1 plus T2 by 2 minus Ts. So this is the initial temperature, final temperature,
and the temperature of the surrounding. So let's put the values in this particular formula. तो दो बार हमें value put करनी होती है इसमें. So let's do it for the first case, that is given 80 to 60. The temperature falls in 10 minutes. So 80 minus 60 upon 10 will be equal to minus of k into 80 plus 60 by 2 minus 30. And once again, for the next case, the temperature of the body after next 10 minutes is. So let's the temperature is T. Take it T. So 60 minus T upon 10 will be equal to minus of K into 60 plus T upon 2 minus of 30. So if we solve these two, we'll get, divide कर दो दोनों को, better let's divide it. So 10 and 10 gets cancelled, and this will be 20 upon 60 minus T, and it will be equal to, this will become, if we do the LCM, it will be 40, yeah, and this will be T upon 2. So this goes like 10 times and 4. So T will be equal to 4 into 60 minus of 40. 5T will be equal to 4 into 60, and T will become equal to 48 degrees Celsius. So this will be my answer. So you just have to do the calculations. The formula is pretty standard. It's very easy, and you get like two variety in this particular type of question. Either they will ask ki 60 से 70 कितने time में हो जाएगा, or they will ask ki same amount of time, like 10 minutes में temperature कितना रह जाएगा. So this is the case that they have asked here, and you have to remember in this case कि अगर पहले the rate of cooling जो है वो decrease होता जाता है with time. So पहले 10 minutes में, पहले 10 minutes में, if the temperature has decreased by like 20, from 80 to 60, it has decreased by 20 degrees Celsius. In the next 10 minutes, the decrease will be less. So we can see over here कि ये 18 से ही decrease हुआ है, और maybe 12 से decrease हुआ है. All right, 12 से. So these things we have to remember. Next question. A spherical black body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius is halved and temperature is doubled, the power radiated is. So we know that power radiated will be equal to sigma, or it's black body, so it becomes sigma A t to the power 4. Now let's do the variations that they have told us. Sigma is like a constant. So area, now the radius is halved. So area becomes A by 4, all right? And temperature is doubled. So this thing becomes 2T to the power 4. So we can see from over here that it becomes 4 times of AT, or sigma AT. And this sigma AT was 450 initially. So our answer will be 4 times of 450, and it will be 1800 watts. So again, a pretty standard question, but you see from Stephen's law and Boltzmann law, you can see a question every time. Either dimensional formula they will ask you to compare, or they will give the values, or find the rate of radiation or whatever. So you have to remember this. Purely formula based, the entire radiation part is very important, and you have to do it. All right. If momentum P, area A, and time T are taken to be fundamental quantities, then energy has dimensional formula. Now, a very basic question, a very standard question. You have seen this question in the PYQs like many times. All right. And there are high chances that such question can be asked this year as well, because since many years they have not asked, but they have been asking these questions a lot of times. So dimensional analysis is a very important like portion for this particular exam. So let's do it. So let's say energy depends on momentum to the power A, area to the power B, and time to the power C. So let's write the dimensional formula for energy. These are very easy questions. You just have to avoid calculation mistakes. Remember the dimensional formulas very clearly. So energy का dimensional formula हो जाएगा mL2t minus 2. Momentum, it is mLt minus 1 to the power A.
area is L2 to the power B, and time is T to the power C. Now let's equate the powers or collect the powers first on the RHS. So M has power A, L has power A from over here and 2B from here, and it is absent here. Similarly, T has a power minus A from here and C from here. And here we have M1, L2, T minus 2. So we can see directly over here that A will be equal to 1. All right. A plus 2B is 2. So A plus 2B will be equal to 2. Put the value of A over here. So B will be equal to like 1 by 2. And from here, we can see that minus A plus C will be equal to minus 2. A is minus 1, so C is equal to minus 1. So E becomes, put the powers in this main equation that we had assumed. So momentum to the power 1, area to the power 1 by 2, and T to the power minus 1. So we have this option over here. So again, a standard question, but carefully करना होता है, you have to practice this. And ऐसे questions में mistake नहीं करनी है, because everyone, literally everyone will do this question. Okay, they will know at least. गलती होने के chances केवल calculation में होते हैं, तो be careful in that. I told you in the starting that if you want to win in NEET, you have to do minimum mistakes or zero mistakes in your exam. ठीक है? Don't lose marks on silly mistakes. अगर आप अभी तक lose करते आ रहे हैं, तो the best way is to do it very carefully, write down everything, underline the important points or words in the paper, and write the formulas and variables then and there. And you will definitely minimize your silly mistakes from that. Okay. Next question. Standing waves, again a very important concept, very important. I advise you to do all the variations of this particular question when a standing wave equation is given to you. All right. Standing wave की सारी properties आपको याद होनी चाहिए. Distance between the nodes and anti nodes के बीच की दूरी, जो consecutive loops है वो opposite phase में oscillate करते हैं. अगर ओरिजिनल वेव्स का एम्पलीट्यूड ए है तो स्टैंडिंग वेव का 2a होता है, और स्टैंडिंग वेव का 2a है तो ओरिजिनल वेव्स जिनसे मिलकर मेरा स्टैंडिंग वेव बना है उनका a हो जाएगा. ऑल सच थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन. सो लेट्स कंपेयर इट विद द इक्वेशन y is equal to 2a sin kx cos of omega d. This is the standard equation of a standing wave. So यहाँ से हमको compare करना पड़ेगा. Let's read the question. The standing wave in a medium is expressed as this: the distance between two consecutive points of minimum and maximum displacement. So minimum displacement is a node, maximum displacement is an antinode, and distance between two consecutive nodes and antinodes कितना होता है? lambda by 4 होता है. So you have to find lambda from over here. अब वो कैसे निकलेगा? तो we know that k यहाँ पर है, x का कोएफिशिएंट is k, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0.8 है, तो k का वैल्यू is 0.8. Now k is 2 pi upon lambda, that will be equal to 0.8. All right. So lambda from over here will become 2 pi upon 0.8 or 8 upon 10. ठीक है, तो ये 5 times हो जाएगा and ये 2 times हो जाएगा. तो lambda comes out to be 5 pi by 2. So lambda by 4 will come out to be 5 pi upon 8. So इक्वेशन याद होना चाहिए स्टैंडिंग वेव का. हर एक पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें x का कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, t का कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट यू शुड नो. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स लैम्डा बाय 2 होगा, टू एंटी नोड्स lambda by 2 होगा, node and anti node lambda by 4 होगा. Let me draw a standing wave for you over here. It's a very important concept and it can be definitely asked in the exam this year. So this is how the loops will form in a standing wave, and वो oscillate करेगी by forming like this loops. The consecutive loops will be in opposite phase, alternate loops will be in the same phase. So this is my node, this is my node, this is my antinode.
This is lambda by 2. So obviously this will be lambda by 4 and that's what we were asked in the question. So इसके अलावा मैंने बता दिया आपको क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें. ऑलराइट, एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी डिड इट लास्ट टाइम कि एक्स का वैल्यू कुछ दिया होता है कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एट मिड पॉइंट ऑफ नोड और एंटी नोड. सो मिड पॉइंट ऑफ नोड एंड एंटी नोड वुड बी एक्स इज इक्वल टू लेमदा बाय 8. सो लेट टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ लेमदा एंड वहां से हमने करना होगा इसको. तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एज आई टोल्ड यू, लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू डू इट केयरफुली. बाकी तो आपको गेट्स आइडेंटिफाई करना आते ही हैं. तो सी, दिस इज अ नॉट गेट ओवर हियर, सो दिस विल फॉर्म ए बार. दिस अगेन नॉट गेट, सो इट विल फॉर्म बी बार. नाउ इट्स अ नॉर गेट ओवर हियर, नॉर गेट, so it becomes a bar plus b bar to the whole bar. Now this thing, if we apply the De Morgan's theorem, I can write it as a dot b. Now I have fed a dot b to this NOT gate again, so this will be a dot b bar. This will be my final output, and equation से visible है कि it's a NAND gate, मतलब NAND output है ये. So this entire setup will behave like a NAND gate. So this is how you have to do it. लाइक थोड़ा सा बुलियन आपको एक्सप्रेशंस सॉल्व करते आना चाहिए. दैट्स इट. एंड ये डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको ध्यान रखनी है कि ए बार प्लस बी बार टू द होल बार इज इक्वल टू ए डॉट बी. अब इसके वेरिएशंस पता होने चाहिए कि लाइक ए बार प्लस बी बार तो वो ए डॉट बी का बार हो जाएगा. ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड बार ले लो तो बार एंड बार गेट्स कैंसिल्ड. नाउ इसका उल्टा भी वैलिड है कि ए डॉट a bar dot b bar का whole bar will be equal to a plus b. तो a bar dot b bar can be written as a plus b to the bar. इसमें और भी variations कर सकते हैं. They can make it tough. Okay, they can make it tough. But if you remember these basic things, इसमें आप वेरिएशन डेफिनेटली कर सकते हैं. कहीं भी बार ऐड कर दिया तो आप उस पर बार लगा दो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर हर बार आता ही है. एवरी टाइम दे आस्क दिस क्वेश्चन. A car moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a string of length 1 meter. The angle made by the string with the vertical is. So it's again a direct formula. ये जो circular motion वाला part है, it's very important for this year's exam. It's been a while कि जब उन्हें circular motion से कोई question ऐसे direct formula पर पूछा हो. बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर हाई चांसेस कि पूछा जा सकता है. नीट में बहुत बार पूछा है पहले उनने, तो इस साल डेफिनेटली पूछ सकते हैं. तो हमें पता है कि जब पेंडुलम होता है इस तरह से, तो जो tan थीटा जो एंगल बनाता है, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. तो वी नो इट एज द डायरेक्ट फॉर्मूला. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. 10 का स्क्वायर, r will be equal to 10 and g will also be equal to 10, so it comes out to be 1. So theta will be equal to 45 degrees. So again a very important question, a very easy one, but you have to remember this formula because अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है या तो आप हो सकता है कि आप स्किप कर जाएं फॉर्मूला. तो ये आपको याद रखना है. बैंक्ड रोड्स वाली सारी कंडीशन याद रखनी है. विदाउट फ्रिक्शन स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड, मैक्सिमम स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला, कोनिकल पेंडुलम, ये सारे टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू रिवाइज. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. The root mean square speed of hydrogen molecules at a certain temperature is 300 meter per second. If temperature is doubled and hydrogen gas dissociates into atomic hydrogen, then the RMS speed. So again, a simple question, root of 3 RT upon M. Now, temperature is doubled. This is made like 2 times. All right. And this dissociates, hydrogen dissociates into atomic hydrogen, so mass becomes 1 by 2. So this entire thing will become root 4 times, or v dash will be equal to 2 times of the vrms. So the answer will be 600 meter per second. Now again you have to do all the variations of this vrms वाला equation. ठीक है, ratios पूछ सकते हैं दो अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेम्परेचर्स पर, या फिर सेम टेम्परेचर है लेकिन गैस अलग है तो पूछ सकते हैं. तो all the variations you have to practice. This is again a very important question and
केटीजी में से भी बहुत कम चीजें हैं, कुछ बहुत कम टॉपिक्स हैं जो पूछी जा सकती हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम केटीजी, सो यू हैव टू रिवाइज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन. हर बार क्वेश्चन पूछते हैं. It's very likely that question, such pulley question or a question on inclined plane friction पर वो पूछा जा सकता है आपसे. So in the shown figure, the coefficient of static friction between the block A and mass 20 kg and a horizontal table is 0.2. So this is my coefficient of friction, 0.2. What should be the minimum mass of hanging block just beyond which the block starts moving? So हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन निकाल लेते हैं. तो लेट्स से इसका मास जो है वो m है मेरा. लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ओवर हियर. सो जब भी देखो न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन हो, फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. फ्रिक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहला आपको जो काम करना है वो एफ मैक्स का वैल्यू निकालना है. एफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन. 0.2 इंटू एन ओवर हियर विल बी 20 जी और 200. सो एफ मैक्स का वैल्यू 40 न्यूटन आ रहा है. एफ मैक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा है. यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्लियर है कि द ब्लॉक इज नॉट मूविंग. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी है ब्लॉक का, जो जिससे वो चलने लगे. तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है पर वो मैक्सिमम लगेगा. ऑलराइट, तो द फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस. हियर द टेंशन विल एक्ट, here tension and mg. So we know from over here that T will be equal to mg, and from here we'll know that T will be equal to F is equal to 40. So 40 will be equal to m into g. So m will be equal to 4. So अगर 4 से बड़ा हो गया मास, then it will start slipping. All right, just exactly 4 है तो it's on the verge of slipping. So friction questions, basic question, don't do tough questions. बहुत ज्यादा कि 4 ब्लॉक रख दिए, 3 ब्लॉक रख दिए. दो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स बीन अ वाइल जब वो पूछा है. बट स्टिल अगर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में आपको इशू आता है तो कोई बात नहीं. जो नॉर्मल हमारे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन में इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्वेश्चंस है फ्रिक्शन के, वो जरूर प्रैक्टिस करें. न्यूटन्स लॉ जरूर प्रैक्टिस करें. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन एरर हमेशा पूछते हैं. एवरी टाइम दे आस्क दिस क्वेश्चन. सो अ मास इज गिवन एज 2 प्लस माइनस 0.1 kg and v is given as 10 plus minus 0.2. काइनेटिक एनर्जी विद एरर इज. सो काइनेटिक एनर्जी का पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हाफ इंटू m is 2 and v is 10 का square, so it will be 100 joules. All right, this will be the value of k. Now let's find the error. So error का expression यहाँ से लिखेंगे हम. delta k upon k is equal to delta m upon m plus 2 into delta v upon v. So delta k upon, let's put the values. तो यहाँ पर 100 रख दिया मैंने. delta m is 0.1 upon mass is 2 plus 2 into delta v is 0.2 upon 10. तो अगेन ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो डेल्टा के आई विल गेट 10/2 प्लस 4. ठीक है, तो इट बिकम्स 9 जूल. सो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज के प्लस माइनस डेल्टा के. सो 100 प्लस माइनस 9 जूल, दिस विल बी माई आंसर. सो अगेन अ प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट देखो एरर में क्वेश्चन हर बार पूछते हैं. एवरी टाइम दे विल आस्क. ठीक है, तो you have to practice it. It's again very easy. ठीक है. The total energy of an electron in hydrogen-like atom in an orbit is minus 13.6. So this is the total energy. Its kinetic energy and potential energies are. So kinetic energy का जो होता है वो it is equal to the magnitude of the total energy. All right. और negative of the total energy we can say, because total energy negative होती है. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी. एक ही बात है. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, वो भी नेगेटिव ही आएगी इसी की तरह. सो इट विल बी माइनस ऑफ 27.2 इलेक्ट्रॉन. सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी
and kinetic energy is equal to minus of total energy. So this option will be correct. Next question. Power delivered to a particle varies with time as P is equal to T square plus T plus 1. Find the change in kinetic energy. Now this is a trap over here. People are wondering कि kinetic energy and power में हम कैसे relation निकालेंगे. तो हमें पता है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, राइट. सो वी कैन राइट पावर एज dw अपॉन dt. So we can write it as dk by dt as well. So from here we can write कि dk by dt जो होगा वो t square plus t plus 1 के बराबर होगा. dk will be equal to t square plus t plus 1 dt, and let's integrate it from 0 to 1. So change in kinetic energy will become t cube upon 3 plus t square by 2 plus t from 0 to 1. So let's put the value 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1, and this will become what? 11 upon 6 joules. So again, इसमें केवल इतना सोचना है कि power can be written as this. Power again बहुत important है इस बार के लिए. ऑल द वेरिएशंस जो भी क्वेश्चन पावर पे बनते हैं, एफिशिएंसी पर क्वेश्चन, पावर कांस्टेंट होता है तो v टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, x टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, या फिर vx पे कैसे डिपेंड करेगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइट ऑफ द कैपिलरी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. हो सकता है हाइट ऑफ कैपिलरी पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिले. तो अगेन हाइट ऑफ कैपिलरी जो होगा, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, तो 2t cos थीटा अपॉन r rho g हो जाएगा. फ्रॉम हियर वी कैन सी इन आवर क्वेश्चन रेडियाई दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी of the tubes. So this concept we have to use. H1 by H2 will become R2 upon R1. So it will be 0.4 upon 0.2. So it comes out to be 2 by 1. So a simple question, but you have to do again questions on this particular formula. जो भी variety of questions इसमें बनता है, insufficient length की capillary होती है तो क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि liquid कभी overflow नहीं करेगा. Even if the height of the capillary liquid comes out to be 10 centimeter and आपका capillary 6 centimeter length का ही है, तो भी liquid कभी overflow नहीं करता. आप स्पेस में ले जाएंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो भी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा. ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. बाकी सरफेस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरिएशन विद द एंगल एंड एवरीथिंग. सो just practice the questions on height of capillary. Next question. The stress versus strain graphs for two wires made up of different materials A and B are shown. If YA and YB are the Young's moduli of the material, then so हमें पता है कि the slope of the stress strain curve will give us the Young's modulus. So YA upon YB will be equal to tan theta A upon tan theta B. So tan 53 upon tan 37. So tan 53 will be 4 by 3, tan 37 will be 3 by 4, and it will become 16 upon 9. So YA upon YB will be equal to 16 upon 9. So YB will become 9 by 16 of YA. Easy question, we just have to see the graph and know that slope जो है वो यंग्स मॉड्यूलस के बराबर है. बहुत बार ऐसा करते हैं, वो स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ दे देंगे तो इट्स स्लोप विल बिकम 1 अपॉन यंग्स मॉड्यूलस अगर स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ दिया है. तो यू हैव टू बी केयरफुल कि उनने आपको कहीं ट्रैप तो नहीं किया है. ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सी द ग्राफ केयरफुली, एकदम उसमें लग नहीं जाना है सॉल्व करने में. तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड सच मिस्टेक्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन. बट बाकी तो इजी चैप्टर, द सॉलिड चैप्टर इज एंटायरली इजी. ठीक है, उसमें मार्क्स लूज करने ही नहीं है. मार्क्स लूज होते भी है तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक से होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है.
A simple pendulum 50 centimeter long is suspended from the roof of a cart accelerating horizontally with a constant acceleration root 3g. The time period of the small oscillations is. So again, the time period is 2 pi under root of L upon G effective. This is the general formula. In this case, it will become under root of L upon root of G square plus A square. This will be my value for G effective. So G effective हम निकाल लेते हैं under root of G square. So G square plus 3G square. So it will become 2G. So time period comes out to be 2 pi under root of L. It will be 0.5 upon 2 into 10. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 40 या 4 इंटू 10. ठीक है, अब पाई को ना रूट 10 लिख सकते हैं. इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल. ये ध्यान रखना है आपको कैलकुलेशंस के लिए. ऐसा नहीं इन क्वेश्चन में पाई को 3.14 लिखने लगे. जहां भी रूट 10 एंड पाई आएंगे या तो मल्टीप्लाई कर दो या कैंसिल कर दो उनको. डिवीजन में अगर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन में है तो रूट 10 इंटू रूट 10. पाई को रूट 10 ले सकते हो, रूट 10 को पाई ले सकते हो. तो दिस थिंग विल बिकम 1. ठीक है, ये 2 पाई हो जाएगा. रूट 10 को मैंने पाई लिख दिया तो दे विल कैंसिल आउट एंड टाइम पीरियड विल बी 1 सेकेंड. तो अगेन इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड है. ये जो जी इफेक्टिव वाले क्वेश्चंस है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वाले, वो खासकर प्रैक्टिस कर लेना. देयर आर हाई चांसेस कि इसको पूछा जा सकता है. ठीक है, लिफ्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है. ठीक है, पानी के अंदर स्ट्रिंग या बॉब को हमने डुबो रखा है, वैसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैं भूलता हूं हर बार ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का फेवरेट है, वेरी हाई चांसेस की पूछेंगे. ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट अप्लाई द केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ ओवर हियर. सो वीपी माइनस 4 इंटू आई इज 4 माइनस 10 माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 into di by dt is 10 to the power 4 is equal to vq. So vp minus 16 minus 10, इसको सॉल्व करेंगे minus 50 is equal to vq. तो vp minus vq will become, सारा माइनस है उधर चला जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 76 वोल्ट. ऑलराइट, तो अगेन यार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इसमें. बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चंस, प्लीज प्रैक्टिस कर लो. मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या करना है, वेरिएबल्स में भी लिख देता हूं. किरचॉफ लगाना है, यहां का पोटेंशियल लिखो माइनस वीपी, यहां का पोटेंशियल लिखा माइनस आई इंटू आर. रेजिस्टर है तो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा माइनस आई आर. फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो ड्रॉप होता है, तो माइनस वी लिख दिया जो भी यहाँ का होगा. और करंट इंक्रीज कर रहा है तो अगेन द बैटरी विल लुक लाइक दिस ओवर हियर. करंट इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिंग बैटरी होगी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू वी क्यू. अब साइन चेंज हो सकते हैं यार, बैटरी को टर्न कर दिया मैंने तो प्लस हो जाएगा, करंट डिक्रीज कर रहा होता तो एल डी आई बाई डी टी में प्लस हो जाता. तो यू हैव टू कंसिडर द साइंस एंड ऑल द प्रोटोकॉल्स जो आपने पढ़े. तो अगेन इंपॉर्टेंट है, बट फंस सकते हैं यहाँ पर स्पेशली इन साइन, तो उसका ध्यान रखें. प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं फंसेंगे. रूट मीन फ्री पाथ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो मीन फ्री पाथ होता कितना है, अंडर रूट ऑफ रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन. ठीक है, जहां पर एन नंबर डेंसिटी हो गया, डी इज द डायमीटर. तो यहाँ पर हमसे पूछा है मीन फ्री पाथ का रेशियो पूछा है, तो L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू, L जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N इंटू डी स्क्वायर होगा. तो N2 बाय N1 इंटू D2 बाय D1 होल स्क्वायर. नंबर डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है एंड डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो L1 बाय L2 विल बी इक्वल टू, नंबर डेंसिटी का रेशियो विल बी 4 बाय 3 इंटू दिस विल बी हाउ मच 2 बाय 5 होल स्क्वायर. ऑलराइट, तो this value
will come out to be L1 by L2 is given. Yes. So number density is inversely proportional. ठीक है, 2/5. So this will come out to be 25/3. 3/25. Let's check it once. The ratio is number density is N2 by N1. So this will be 4/3. Yes. So this will come out to be 25/3. L2 by L1 or L1 by L2, whatever. Next question. In a uniform circular motion, both velocity and acceleration are constant. Acceleration and speed are constant, but velocity changes. Both acceleration and velocity changes. देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है. वेलोसिटी भी चेंज होगी, दो देयर एंड एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, दो देयर मैग्नीट्यूड्स विल रिमेन सेम. ये चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन. ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो इट्स एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल. नाउ एक कंफ्यूजन इसमें होता है कि एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर है तो डायरेक्शन कांस्टेंट हुआ. नहीं, ऐसा नहीं है भाई. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर, so acceleration will be pointing this way. Object is here, acceleration is pointing this way. So orientation बदल रहा है, तो इसलिए acceleration का direction भी change हो रहा है. तो both acceleration and velocity will change. The equation of trajectory of a projectile is given by y is equal to 4x minus x square by 2. The maximum height attained by the projectile is. So again इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ये क्वेश्चन है, कंपेयर करना होता है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? सो इट्स x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. देखो ब्रैकेट में यहाँ पर 1 है, तो हम एक काम करते हैं कि 4x को कॉमन निकाल देते हैं. 4x हमने कॉमन जब निकाला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, क्योंकि 4x कॉमन निकाला था तो यहाँ पे 4x आ जाएगा. 1x विल कैंसिल 1x, सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू 4x into 1 minus x upon 8. So you can see directly compare it. X का कोएफिशिएंट यहाँ tan थीटा है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, तो tan थीटा will be equal to 4. Similarly, r will be equal to 8. And सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें पता है, h by r is equal to tan थीटा upon 4. So h जो हो जाएगा 8 into 4 upon 4, 8 meters हो जाएगा. The change in gravitational potential energy when a mass m is raised to a height nr above the surface of earth is. So let's draw it. Potential energy here on the surface will be minus of mgr. हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला. At height nr, its formula will become minus of mgr upon 1 plus h upon r, and h is nr upon r. Sorry. So change in potential energy निकालेंगे, u final minus u initial. U final is minus of mgr upon n plus 1 minus of minus mgr. So this thing will become mgr minus mgr upon n plus 1, and this will become n mgr upon n plus 1. Potential energy का concept in gravitation is very very important. Energy conservation पर question पूछा जा सकता है, change in potential energy पर पूछा जा सकता है. You have to do it, you have to practice these questions. Next question. The escape velocity from the surface of two planets of same masses is in the ratio 1:2, is √2. Then ratio of their densities is. So I'll though 1 hour is over, I'll extend it by like 3-4 minutes more. 1 or 2 questions are left, so let's cover them up as well. तो escape velocity again एक बहुत important concept है. यहाँ पे density से relation पूछा है हमें, ठीक है. सो एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r होता है. अब हमसे बोला है यहाँ पर मास
भी सेम है उनका। तो एस्केप वेलोसिटी जो होगा, वी कैन सी फ्रॉम ओवर हेयर दैट एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर. So we can write that v1 by v2 will be equal to under root of r2 upon r1. So 1 upon root 2 will be equal to r2 upon r1 under root, or we can write that r2 upon r1 will be equal to 1 upon 2. अब हमें तो डेंसिटीज का रेशियो पूछा है, तो मास सेम है. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. अब स्फेरिकल होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. तो ρ1 बाय ρ2 हम लिख सकते हैं r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब. सो यहां से हो जाएगा 1/2 वोल क्यूब. सो इट विल बी 1/8. सो यहां पर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करिए क्वेश्चन में. डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बनता, पर यहां से डेंसिटी पूछी है तो वी हैव टू अगेन रिमेंबर कि मास कांस्टेंट दिया है, तो वहां से हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे. ऑलराइट. तो अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी. ट्राई टू डू ऑल द वेरिएशंस जो भी इस क्वेश्चन फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं. बहुत बार ऐसा होता है डेंसिटी कांस्टेंट दे देते हैं या फिर डेंसिटी को के साथ में रिलेशन दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन आर, और मास को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी. तो यहां से जो एस्केप वेलोसिटी आ जाती है मेरी, वो इट कम्स प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो इनटू आर. एंड फिर हमें डेंसिटी का रेशियो दिया होता है, रेडियस का रेशियो दिया होता है, एंड वी हैव टू डू द क्वेश्चन. सो डेंसिटी जब भी कहीं आए एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में पूछ सकते हैं, तो आपको मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में लिखना होता है. The work function of a photosensitive material is 4 electron volt, the longest wavelength. तो बेसिकली हमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा phi is equal to hc अपॉन lambda नॉट. लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज. सो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12400 अपॉन lambda. तो दिस कम्स आउट टू बी 3100. तो lambda is 3100 एंगस्ट्रॉम और 310 नैनोमीटर. ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3100 नैनोमीटर नहीं होगा, ये एंगस्ट्रॉम होगा, बिकॉज यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम में होता है. तो यहाँ पर फंसा सकते हैं, सेम ऑप्शन देके फंसना नहीं है. Two springs, again a very important question, a very important question. Two springs of spring constant K and 3K are stretched separately by same force. Force same है, the ratio of potential energies. तो potential energy हमें पता है half kx square होता है. U1 upon U2 will be equal to K1 by K2 into x1 upon x2 whole square. So अब force same है, तो force is equal to K into x. So हम यहाँ से लिख सकते हैं K1 x1 will be equal to K2 into x2. So k into x1 will be equal to 3k into x2. So x1 by x2 will become 3. So यहाँ से this will be 1/3 and this will be 3 whole squared. So 3:1 का रेशियो आ जाएगा. तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. एग्जैक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Two identical particles are projected simultaneously from a tower with speeds v and v/2 at angles 30 degree and 60 degree. The acceleration of center of mass. हमेशा ध्यान रखना है, whenever two objects or three objects or n number of objects are in air, center of mass का acceleration will be g. इसमें फॉर्मूला लगाओगे भी तो वही आंसर आएगा, बट आप याद कर लो इसको, whenever objects are in air, the acceleration of center of mass will be g only. Okay. Yeah. So this last question, question on rotational angular momentum पर question है, बहुत important है question. Again, you can say it's a pretty standard question, but बहुत सारे बच्चों को इसमें issue आता है. तो a mass m is projected with velocity v at an angle of 45 degree. तो let's say हम डायग्राम बना लेते हैं, हमने इसको प्रोजेक्ट किया है at angle 45 degree, let's say with some speed v. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection, इस point के about निकालना है when the
ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, तो जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो हमें पता है इसका वेलोसिटी v cos थीटा होगा। ऑलराइट, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। अब एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज m into v r perpendicular, और वी कैन से एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। ठीक है, अब यहां पर क्या निकालेंगे हम, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर और ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है। क्या हम इस पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, वी डोंट हैव द एंगल। लेकिन हम इस वेलोसिटी से पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हैं, वी नो इट एंड इट विल बी दिस, एंड ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। सो एंगुलर मोमेंटम यहां पर हो जाएगा एम वी कॉस थीटा इनटू मैक्सिमम हाइट। जस्ट पुट द वैल्यूज, सो इट विल बी एम वी इंटू कॉस ऑफ 45, कॉस थीटा रख देते हैं अपन, इंटू एच हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस थिंग विल बिकम m v क्यूब इंटू, ये 1/√2 हो जाएगा, ये यहां पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2g इंटू 2 × रूट। सो दिस थिंग विल बिकम mv क्यूब अपॉन 4√2g। This will be my answer. So remember this question, again important question है। So this is about some questions जो कि बहुत important है। You have to solve all the concepts and questions related to जो यहाँ पर हमने discuss किया है, and you will definitely see similar questions in your actual exam. So let's wind it up, and there will be more master classes for other subjects. Please do attend them. Topic wise, chapter wise questions की भी classes जो हैं वो upload हुई हैं। You have to see them, go through them and solve all those questions, and it will be very much beneficial for you in for your NEET exam. So all the best. Thank you very much.